Hi students, this is a special video for GP rating candidates who are aspiring to become officer. मतलब जो सपना देख रहे हैं कि मैं ऑफिसर बन सकता हूँ क्या, तो उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगा. तो what I have seen that many of the GP rating candidates, they have passed their 12th PCM, but they scored less percentage than 60%, which is eligibility criteria for DNS. And they were having in their dreams that they can join merchant navy as an officer. But then they had to compromise and they had to join as GP rating because there is no alternative. So such candidates are there, or other category of candidates who were not knowing how to join, where to join, and they have accidentally come in GP rating. So for them also this video will be very useful. So let us see what is information there for the GP candidates to become an officer. From GP rating to deck officer, that is, of course, if you join deck department. If you are joining engine department, then you cannot become deck officer and you cannot proceed for navigating officer cadre. Then you can go for engineering exams. But GP rating to deck officers, what are normal questions in their mind? Can I appear really for officers exam? I have not done 12th science with PCM. What are the steps ahead? Will I get job after passing second maths exam or NWKO? And what is this NWKO NCV? NWKO NCV is Navigational Watchkeeping Officer near coastal voyages. Means you will be a watchkeeper. You can get job as a third officer on coastal ships if you pass this exam. So that is difference. And this can be upgraded to second mates foreign going after doing many things. And of course, this is one catch in that you must have passed 12th science with PCM. So that means without 12th science, can the boys cannot become officer? Yes, they can. They can become NWKO NCV. They can become chief officer on the coastal ships. They can become captains on the coastal ship who have not done 12th science with PCM. So even you have done commerce, arts, you can become master on the coastal vessels. So that is truth. But if you have not done PCM 12th science, then for second mates FG, chief officer and captains on foreign going ships, you will not be able to appear for those exams. That is the criteria. Let us see now what is the roadmap from GP to NWKO NCV, because NWKO NCV is the first step towards your second mates foreign going or first step for becoming an officer. Let us see. So a student who is joining after his GP rating successfully, then he requires 36 months sea service, which includes his service starting from the first day as trainee seaman if he has done GP rating course. But if you have not done GP rating course, then 36 months sea service will be after obtaining rating forming part of navigational watch. That means first 6 months of sea service will not be counted towards this 36 months. So that is the catch. But people who are going from the GP rating course, then 36 months total sea time is required. Above 36 months must include 6 months supervised breach watchkeeping duties. So 6 months from these 36 months, you must get certificate from the ship and that you should have kept a breach watchkeeping supervised under the officer. So you should have kept watch with third officer or chief officer or the second officer for at least 6 months duration. GP rating must obtain tar book. Now, GP ratings who are aspiring to become officer, so they should take a tar book. Now, this tar book is separate
First star book you are taking for your RNW, that is trainee seaman. Then you are taking tar book for AB, COP, and this is now third tar book. So this tar book you will get from the Company of Master Mariners of India. उनका ऑफिस है अंधेरी में. This tar book is used normally by BSc Nautical Science cadets who are doing 3 years in college and joining ships. तो उनके लिए ये tar book बनाया हुआ है. तो यही tar book जीपी रेटिंग के लड़के लोग यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में. ओके, एंड कभी ये tar book लेके जाना है आपको, पहले शिप में नहीं लेके जाना है, दूसरे शिप में नहीं लेके जाना है. वंस यू आर होल्डर ऑफ AB COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, then you should take this star book and join the ship and complete this star book. Okay, then there is huge list of the documents. So वो लिस्ट से मुताबिक, लिस्ट के मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए एंड ऑब्टेन असेसमेंट लेटर फ्रॉम MMD that 36 months आपने किया है, आपने एवरेज वॉच कीपिंग किया है, या टार बुक है आपके पास प्रूफ, और आपका सी टाइम इतना हुआ है, और इतने सारे डॉक्यूमेंट आपने दिया है. तो ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैंने एक स्लाइड में लगा दिया है, तो आपके रेडी रेफरेंस के लिए. तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज ऑन वन ऑफ द स्लाइड्स. सो ये सारा लेके जाना और असेसमेंट लेटर MMD से लेके आना. ये असेसमेंट लेटर, with assessment letter you can take admission in LBS College, Lal Bahadur Shastri Nautical College, Mumbai, for foundation course, जिसका फी रहता है अराउंड 11,000. ड्यूरेशन इज 2 months. एंड फाउंडेशन कोर्स ये जो है ये आप 36 months के बाद में कर सकते हैं, या तो यू कैन कंप्लीट दिस फाउंडेशन कोर्स इवन आफ्टर 18 months ऑफ सी टाइम. तो मतलब आपके पास 18 महीना सी टाइम है, तो आप ये फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं. और एट द एंड ऑफ फाउंडेशन कोर्स 4 रिटन पेपर्स कैंडिडेट विल हैव टू क्लियर इन द MMD एग्जाम. तो आपको 4 पेपर देने होंगे, तो वो आपका फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो गया ऐसा हो जाएगा. तो ये 4 रिटन पेपर आपको पास करना है आफ्टर फाउंडेशन कोर्स. ओके, लेट अस सी. आपने तो अभी फाउंडेशन कोर्स कर लिया. After successfully completing the foundation course and clearing 4 papers, and after completing courses like, आपको अभी एडवांस कोर्स करने पड़ेंगे. कौन से कोर्स है? तो है ROSC, that is radar observers कोर्स, ARPA कोर्स है, EGDIS का कोर्स है, GMDSS कॉक सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्स है, PSC-RB कोर्स है, एडवांस फायर फाइटिंग है, एंड मेडिकल फर्स्ट एड है, MFA. इतने सारे कोर्सेस आपको करना है, एंड कैंडिडेट कैन बिकम एलिजिबल फॉर NWKO NCV. तो आपका फाउंडेशन कोर्स प्लस इतने कोर्स, देन यू विल बी एबल टू प्रोसीड फॉर योर NWKO NCV कोर्स. तो ये कहाँ है देखो, ड्यूरेशन ये कोर्स का है 4 months, एंड फीस आर वेरिंग फ्रॉम 30,000 to 40,000. वेरीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज ये अभी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी कर सकते हैं. बॉम्बे में मासा करता है, मासा में हो जाता है, या MMTI में हो जाता है, LBS में हो जाता है. तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग फीस हो सकते हैं. ओके, एंड ऑफ दिस कोर्स कैंडिडेट विल हैव टू क्लियर 6 पेपर्स इन MMD एग्जाम. तो आपको 6 सब्जेक्ट्स होंगे, 6 आपको पेपर्स क्लियर करने हैं आफ्टर यूर डूइंग दिस 4 months course of NWKO. Okay, then 4 months NCO NWKO course ये जो रहता है, ये 4 बार साल में हो, 3 बार साल में होता है. Every 4 months, every 4 months this course is conducted. Candidates can do NWKO NCV course after 30 months of sea time. So 30 महीने के बाद आप ये कोर्स कर सकते हो और ये 6 पेपर दे सकते हो. तो पहला है आपको जो फाउंडेशन कोर्स है, तो वो 4 पेपर देने हैं. वो 18 महीना सी टाइम के बाद में भी आप प्लान कर सकते हो. और ये जो है NWKO का कोर्स, ये 30 महीना सी टाइम के बाद में भी आप अपीयर कर सकते हो. तो मतलब पार्ट बाय पार्ट यू कीप ऑन क्लियरिंग, और यू कैन डू ऑल दिस थिंग टुगेदर. If you are doing all this thing together after your 36 months of TTC time, NWKO candidate can complete
all these things in about 9 months. So इसके लिए नौ 9 महीने से 1 साल लग जाता है। और ये सारा इंफॉर्मेशन मैं कहाँ से किया, तो ये है कर्टसी मिस्टर रेनी कुमार टंडेल, who is pursuing his secondment from Mumbai now. He has already completed NWKO NCV and आगे वाला कोर्स भी किया है, अभी सेकंडमेंट का एग्जाम देने वाला है वेरी सून. So he has passed this information to me. He is one of my student. So I am very very grateful to him. जो मैंने आपको सारा इंफॉर्मेशन बताया, दिस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टीप मैनुअल. तो यहाँ पे ये डिटेल दिया हुआ है. ये और एक टीप मैनुअल से पेज है जो रेफरेंस पेज करके मैं दे रहा हूँ आपको. सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टीप मैनुअल. यहाँ पे आपको मैं ये पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया है. मेनी ऑफ देम मे नॉट बी एप्लीकेबल टू यू बिकॉज दिस इज कॉमन लिस्ट फॉर योर डेक कैडेट्स हु आर डूइंग डीएनएस and SSTP. This is common list for BSc Nautical Science 3 years degree people, and this is common for GP rating who are coming after 36 months. So list of documents to be submitted at the time of assessment at MMD. तो MMD में ये इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट इसमें जो एप्लीकेबल है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको जोड़ने पड़ेंगे for assessment of your C time that you are eligible to appear for NWKO NCV. So boys and girls, I have tried to give you maximum information how to proceed from GP rating till NWKO NCV and passing that exam. इसके आगे वाले वीडियो में we will see from NWKO NCV to second METS. So वो क्या क्या स्टेप्स है वो दूसरे वीडियो में देख लेंगे. इसलिए मैं ये वीडियो ब्रेक किया कि यहाँ मैं खाली डिस्कस कर रहा हूँ कि एक ही कि जीपी रेटिंग 36 मंथ्स एंड यू आर क्लियरिंग NWKO NCV. और अभी जो न्यू स्कीम आया हुआ है ना NWKO NCV डेक कैडेट्स, तो वो स्कीम में केवल 12 महीने में इफ यू आर गोइंग एज डेक कैडेट NWKO NCV after GP rating course, so 12 महीने में you will be able to appear for this NWKO NCV exam, which now you are doing after 18 months or 30 months or after 36 months. लेकिन ये possible है. All the GP rating boys or girls who have not even done science. They are only 10th standard pass and done maybe arts or commerce or diploma, whatever. So they are eligible to appear for NWKO NCV. But आगे जाने के लिए कहाँ पे कि सेकंड मेट्स फॉरेन गोइंग आपको जाना है तो आपको 12th स्टैंडर्ड PCM मिनिमम पासिंग चाहिए. So without that, you will not be becoming eligible for appearing for second METS foreign going. So in this video, that's all. And I hope many of the queries which are coming from the GP rating boys are cleared here and they will be getting big guidance towards their developing career. So thank you so much and wishing you all the best. Captain Jog is signing off here. Bye.